I suppose we are live. Okay. Let me check. Hmm. Yes, we are live. स्क्रीन नहीं आ रही. Yeah. Hey everyone, hope you are all doing really well in these holidays, winter vacations. A very warm evening. We are here. I am Arushi, a UI UX team core member at GDSC NITJ, and I have Devansh along with me. Hey folks, how are you doing? So, first of all, very good evening. 30 मतलब न्यू ईयर ईव पे आने वाली है न्यू ईयर और तुम यहाँ आए हो, बहुत बड़ी बात है. चलिए, anyway, okay. So, I hope you are all excited, doing great, enjoying our holidays, and And learning okay. stuff So, Arushi, along with yeah. you. So, Arushi, should we wait for 2-3 minutes more to get people Yeah, on yeah, board, we are or waiting we for start? people to, yeah, we are waiting for people to join in. Okay, so ask your friends to come on, and we'll be Yeah, about we to are. start at So we'll let's be talk starting about at day 9 one. 5. Yeah, we'll Yeah. start at 9:05. Let's talk about day one until then. So yesterday we got into the very basics of designing and stuff. What is design basically? Why is design necessary? Today we'll go a bit more precise on design, like colors, texts, and of something beyond colors and text as well. And then the major thing why we are here is today for it's hands-on Figma. Hands-on Figma is we'll use our design knowledge and create some very beautiful pieces today, whatever we could manage in the limited time span. So we are So waiting for your basically friends to you join in. so basically UI UX is not only about like for example, if we talk about web development, that like 90 to 95% it only comprises of coding. But UI UX, there's this theory which also plays a major role. Okay. It's not about कि आपको Figma चलाना आ गया, आपको कुछ आपको इलस्ट्रेशंस लेने आ गए, आपको कलर पैलेट्स बनाने आ गए और आपको एनिमेशंस बनाने आ गए तो हो गया यूआई यूएक्स. नहीं, मतलब एक अच्छे स्टेज पे पहुंचने के बाद भी आपको आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाती रहनी पड़ती है. अ, आपको आर्टिकल्स रीड करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे, ऑटो लेआउट्स पे. अभी भी रिसेंटली मेरे को आई गेस 6 महीने हो गए हैं यूआई यूएक्स करते हुए. स्टिल अभी भी मैं ये तो मतलब बहुत कम टाइम है. मैं तो अभी काफी अर्ली स्टेज में हूँ. काफी अच्छे अच्छे यूआई यूएक्स चैनल है, वो भी अभी भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं ऑन इट. तो इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक. तो बिलीव में, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे में आपको पूरा यूआई यूएक्स आ जाएगा, दैट विल नॉट गोना हैपन. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. बट या इट्स अ ग्रोइंग फील्ड. बाकी लेट्स सी कैसा लगता है आपको ये पूरे सेशन में. आई होप Yeah, यू विल एंजॉय. so yeah, of course, we have put in quite some effort, so I hope it displays today. Let's go. So talking about today's work, right? So today's agenda stands for talking about colors. Colors. What are colors? You need colors to turn your gray life into something very interesting, right? Colors basically are appealing to look at. Now, typography, text. How are we able to display our information? Are we really, using text right? And then importance of white space. We need all spaces, buttons, hover around, design components, and then finally hands on Figma for what we are here today. And this is not done yet. We have a surprise for you as well. So let's go. Talking about colors, they can range from the very basics, like choosing a color, to creating a whole color palette around it and then utilizing it into our design. They form the very basis of your project. Without color, it would all look gray. And a wireframe, basically, we discussed about wireframe yesterday. Wireframes are basically
what we are going to present in the future. They form the very beginning stages. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम wireframe बनाते हैं, उसके ऊपर एक हम फिर बाद में colors add करते हैं, text add करते हैं, illustrations add करते हैं to get our design ready. Let's talk about colors in detail now. तो general color selection, हम एक कलर डिसाइड करेंगे सबसे पहले और उसके अराउंड अपनी कलर पैलेट बिल्ड करेंगे. कलर पैलेट बिल्ड करने के बाद उसके बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन अपने डिजाइन में उसको यूज करते जाएंगे टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. डिजाइन इज ऑल अबाउट लुक्स एंड फील्स एज ऑफ येट. हैंड्स ऑन फिग्मा में हम जानेंगे कि यूएक्स एक्सपीरियंस looks and feels के beyond डिजाइन में क्या हो सकता है. So when choosing colors, you can go base the colors in your logo and then continue by selecting gray values and side colors. For example, यहाँ पे we have display of various color shade cards starting from primary, basic, success, info, warning and danger. Now success doesn't necessarily mean कि हमने green color palette choose करनी है, but somewhere it signifies something in our mind. We think about green lights. Green lights gives us a signal of success. Just to think of. Now danger. While thinking of danger, the certain color which flashes in front of our eyes, not our eyes exactly, in our brain is red color. So this is how it all works basically. It is more usually हमारे जो predefined notions होते हैं उनके basis पे ही we are deciding what further we can do with it. So now here is a really nice maketintsandshades.com website which we have figured out over the while. Now you select a color and it will give you a whole range of colors starting from a shade darker, a shade lighter, and we can obviously work around and play around. It is all about playing around with what you have all in your mind and building good stuff. Now, when you work in a team, there will be obviously conflicts, which are very common. And then your taste, your personal preferences, your standings come into play. How well you can deal with these conflicts. For example, we may be designing a floral project. I would like a color white more in that. My team member would like a color pink more in that. We both should come down to a point so that the conflict is resolved and the design looks pretty. Conflict management is really necessary, guys. Now, color errors. Using about colors, talking about colors, it is necessary that we avoid bright colors which are not pleasant to look at. Like I go to a certain website or a certain Android app, iOS app, don't get offended, Apple users. So I would not like a page that would just suddenly catch my attention so much that I'm unable to read what's all going around. I'm unable to grasp कि आगे आसपास चल क्या रहा है, what this application is really exactly want to say to me. So bright colors avoid करना, इसका मतलब ये नहीं we go for dull colors. It's anywhere something in the middle, ना तेरा ना मेरा बीच का. So coolers is again a very important plugin. It's like ChatGPT for your colors. Coolers पे क्या होता है, you can go and majorly get a reading कि आपने जो colors choose किया है, how well they're going together. Next slide shows exactly what coolers landing page will look to you. So here आपको एक hash code दिख रहा होगा, background color. So hash codes are a certain code is assigned to a particular color. Like this code is copyrighted by a specific color. It can't be used by anyone else. So background color यहाँ पे hash code का एक particular है, उसके ऊपर text color है और इसकी rating contrast rating is 8.42, which is very good. You can go ahead with this color in your project if your color scheme of the project looks like this, somewhat this. Now moving on. So color errors के बारे में बात करते करते हम ये नहीं कह रहे हैं कि don't avoid using color. Use color because colors add चमक to your बेरंग जिंदगी. So wireframe में color add करके ही आपका project बनेगा. Wireframe is just the ideating stage. The right side here shows a wireframe only using all the grays. And the left side, it's vibrant, it's colorful, it's playful, it's attractive. Obviously, you would land at a website and you would look for something attractive. Otherwise, आप उसको just scroll करके randomly scroll करके you will just went ahead. You will just go ahead to something else. So colors are very necessary.
Not talking about colors as a brand symbol. Think about Coca Cola. You get a reminder of a fizzy drink like a soda basically. Now, Coca Cola gets us reminded of a red banner with the Coca Cola symbol in text white. Same drink is manufactured by a company, Thumbs Up. Thumbs Up has a blue logo. So color plays very important role here. Now, talking about Starbucks, I'm sitting in Punjab right now. You may be in some other part of India or world, maybe. Starbucks is a global brand. So this color palette officially belongs to Starbucks. It is kind of copyrighted. This color palette gets instantly reminded us of Starbucks. So a logo only is not necessary sometimes. Majorly times it is not only necessary. We need the colors along with it to build the brand value. Spotify, for example, it has a peculiar shade of green which has its own hash code. That green is not very common, but it is common too because it catches our eye daily. So that's what colors come into play. Now, the most important rule when we talk about building color palettes to use in our designs is 60-30-10 rule. How it works is you take a rectangular strip, maybe let's call it of 1,000 length, and then you choose the base color. The कि कौन सा कलर है जो आपके प्रोजेक्ट में मेजरली यूज होने वाला है. Let's go ahead with white for example. Now trim that strip into 600, which forms the 60th part of your design. Now take another color and the same rectangular 1,000 strip. Now trim that to 300, which would form the 30th part of your design. And take another color and trim that to 100. It would form the 10th part of your design. It would form complete a total 1,000, but in ratio of 60-30-10. Or you can say 6-3-1. This is the example which I could quote. It shows like we can use this color against this charcoal gray background, which is entire theme of our PPT that we are following today. So what I did here is took a white strip and then added this purple tinge strip and then added this green tinge strip. This form gave me a mini color palette. This is all about designing your own color palettes, your own tastes. You can draw inspiration from anywhere around you, like greens in the nature, or maybe your own room. You have your own space, you have your own vibe to that room. Just draw inspiration from anything and build your own color palettes, and you can design maybe anything that you have in your mind. And that design would be meaningful for you for sure. Now we are done talking about colors. We can obviously talk a lot more. And now we'll talk about typography. Text. We have some information. We all really like are social animals and want to speak a lot every time. So we have our information to convey as well through our designs. Not only colors, illustrations, and icons would do the job. We need the support of text. Now, choosing a right text, the sizes, it's all very important as it to design the landing pages or whatever we are designing. Font selection. You should choose a legible, simple, and plain font. You can make your choice by considering the user of the brand. The design that we are making is always for the masses. Not all. It is for the masses that we are designing at the professional level. So what we are majorly concerned is कि हम sharp edges text usually formally use करते हैं and the curved edge text usually informally use करते हैं. Like यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा through the GIFs, very cute GIFs, I must say. So consider like this, that you are maybe designing something for the younger part of the society, like very young kids. So we would definitely go for Comic Sans text that would be pleasing for the kids to look at, to grasp. Text should be easily understandable by people, and the text selection leads to triggering the brains into understanding it better. SF Pro may be used in formal language, our university textbooks maybe. Now let's look at this example, a very interesting example. Dates to finances. So modern bookkeeping for digital businesses. The left side, it shows font family fright text, very sharp cut
very professional text, I must say. And then towards the right, we have a rounded text version. Now, let me just read what this slide says. Your font choice should be suitable for the design system you have prepared for your user. For example, a banking application where the average user age group is over 30 years old may choose a font with more serious sharp edges, while a font with more radius values may be chosen when banking for a university audience. Like I just said, it entirely depends upon your client or the user segment that you are targeting. I like formals, to be honest, so my vote goes towards fright text. Now, we have talked about colors. We almost have an idea in our mind that what we are building. We have talked about text. We have selected a text. We want to display our information. Our information may have segments that we want the user attention to the most, and then somewhat less, and then ranging to the absolute least. Now, here, text fonts are done, text sizes come into play. So, we need to create and save font styles which are suitable for our application. You visit a website. The website's logo or the hero section of the website, the center portion text has the most largest text version, for example 200, and then its tagline would be 180, and then next information would be less. So this is all hierarchical. Our headings are usually the largest of size, and then it goes on reducing to the information we want the user's attention the least. So, I would like to grab your attention here by telling that text sizes are also discussed in pixels. Let's move to the next slide. So here, we need to avoid excessive font size differences. Like ऐसा मतलब नहीं है कि हमारा जो first important crucial text है वो 200 का हो और उसके next एकदम से 100 size का हो जाए, which would lead to a lot of irregularity. Irregularity as in it would not be pleasing to look at. It would just be like हम 200 के text को देख के we are running forward and we are not wondering what's written in the 100 numbered text. So we need to make sure that the secondary text are gray tone and font size is small. Like look at this example which we have put in. Its range, it starts from 18 pixel from top and then goes to 14 pixel and goes again to 14 pixel and 24 pixel. Like you may be wondering that 24 pixel must have been come at the top, but it's not like that. We wanted our attention to be at max at 24 pixels. So it is $1,500 and it is in 24 pixels, and the around surrounding information is in less pixels. Now moving forward, we have white space. As important as it to choose the colors, the text, the importance of white space lies equally well there. Like हमने डिजाइन तो डिजाइन कर लिया, but how well we are able to understand it also matters. After all, at the end जो दिखता है वही बिकता है. So white space is for cleaner designs. Like we won't be liking cluttered designs our way. अगर हमें कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा what is the purpose of design, वो तो फिर हमें एक पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती, that would have been same. So white space is very important there. Now, white space maintenance doesn't mean कि हम सिर्फ white space को ही ध्यान दें. It is all a balance at the end of the day. So gap balance is really important here. Like it means paddings and margins should not be avoided in designs. White balance should be taken into consideration. I guess we are obsessed with Starbucks. So we have a Starbucks example here again. So here is a Starbucks card, if you can see. The text is fine, sharp edges, the information is fine, it's readable, the sizes are fine, but still it's not pleasant to look at. The left side, the text is the size of the card is not appropriate. The right side, the size of the card screams that it is a card. At the end of the day, what we want in a product should be easily spoken by the product itself. अगर हम कार्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इट शुड बी अ कार्ड ओनली, इट शुडंट बी एनी रैंडम वेग रेक्टेंगल. नाउ बटन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने किसी वेब पेज के ऊपर लॉग इन करना है, देयर आर बटन्स at the bottom like log in with Google or log in with any other platform. So buttons
you can randomly design buttons in any shape or form, whatever your design screams. But there are some certain set of rules and regulations to be followed for designing a button as well. Like, हमने सब information gather कर ली, we know design well, we know everything, but we can't use everything. We need to use most of it, not everything at times, to make a certain sustainable design. Let's talk about buttons in detail here. Now, we need to create buttons in our primary, secondary, and information colors with different types of heights and font sizes. Most of the times, buttons are rounded edges, and they are there to grasp our information, like grasp our attention. Like, we need to hover from one page to next. Login page में क्या होता है? We need a login page. उसके बाद login का button होता है. Then we move to next. So they are usually of a background color to grab our attention, basically. Now, shadows always don't work. Like I just mentioned कि हमें just learned about shadows. For example, a junior designer, like this kind of a meme says, he or she just learned about shadows, and he or she is very eager, very curious, very excited to use the same skills that he has just learned into his or her design. But that doesn't work. Like, it should be reliable to the other design features that your web page, your design is screaming about. I know I'm talking about a lot of web pages. Let's see whether we'll design a one today or not. Now, design components. We talked about basics. We talked about the looks and feels, the colors, the texts, the spacing. Now we need some interesting elements, right? So here design components come into play. Design components like illustrations, icons. So illustrations, there are many free libraries that can get you illustrations. Like, probably this is me and my co-speaker today. Like, we did a good job, buddy, at the end of the session. And this man is hiking man. So we can get any illustration that you want, considering to your whatever you want to say through your design. For example, if you wish to illustrate a reading man or a reading woman, you can find those designs. I would like to mention Undraw here. Undraw is a website where you can find free illustrations, and Notion maybe. These are taken from Notion. Now, moving ahead to another design component, which is icons. Icons are really important in another sense. Like, you want a Wi-Fi symbol in your design. You want maybe setting symbol, like you can see here listed in our invitation design as well. We sent some online platform, so this session is being conducted online, so we need a replace symbol. It is all icons. Let's talk about a bit of Figma plugins here. So Figma has plugins which are like mini softwares inside Figma. You can use any plugin, and you can basically, they're there to make your life easy, make a designer's life easy. So these icons are available for free at Figma. I've talked a lot. Now we need some action. So here I have Devansh. Devansh will now take us through hands-on Figma session. Over to you, Devansh. Hey guys, so, so you've already heard about the काफी आपका theory part हो गया है. So let's jump into some practical stuff. Okay, so ये यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं. So ये Figma की screen होती है. So Figma is a software for UI UX design. Okay, it's not only Figma. You can also use Adobe Illustrator, but Figma ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? Cause first main reason, it's free. दूसरा, ये भी आपको like it's also a variety of stuff that make it above Adobe Illustrator. तो मार्केट में काफी पॉपुलर है, तो इसलिए मोस्टली लोग इसे ही यूज करते हैं. ओके, सो मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. ये आपका होम बटन रहता है, ये आपका रहता है कम्युनिटी. कम्युनिटी, यू हैव हर्ड आरुषि टॉक अबाउट प्लगइन्स एंड लाइक इलस्ट्रेशंस. तो एक फिग्मा की पूरी कम्युनिटी होती है जहाँ पर आपको प्लगइन्स मिलते हैं, इलस्ट्रेशंस मिलते हैं, यूआई डिजाइन के आइडियाज मिलते हैं, और भी काफी चीजें मिलती है. बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है.
ओके, सो दिस इज कमिटी और दीज आर द टैब्स। ये ओके, सो दिस इज अ फ्रेम। फ्रेम में यहाँ अपने पास ये, यू कैन सी दैट इन द राइट साइड कॉर्नर, आपके पास यहाँ फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, ये आपको डिस्टिंग्विश कर देता है फ्रेम कितने टाइप के रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, लेट्स डिलीट दिस वन। अगर मेरे को चाहिए, मेरे को एक आईफोन पे एक ऐप बनाना है तो आई चूज फोन। ओके, सो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड। कोई भी यूआई बनाते टाइम ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट स्क्रीन। स्मॉलेस्ट से बड़ी स्क्रीन में जाने में आसानी होती है कंपेयर टू बड़ी से छोटी में। तो we'll obviously start with iPhone 8. We also have like iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, 15, but you should always start with the smallest size possible. फोन्स के अलावा इसमें अपने पास डेस्कटॉप्स के भी रहते हैं, लाइक मैकबुक, वी गॉट टैबलेट्स। डेस्कटॉप में वी गॉट मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, प्रेजेंटेशंस एंड वॉचेस, लाइक ओके। सो हम यहाँ पर फोन्स और डेस्कटॉप में ही डील करेंगे। तो ये तो हो गया अपने फ्रेम्स की बात। ये होती है रेक्टेंगल्स की बात। ये होता है रेक्टेंगल, दीज आर बेसिकली दी शेप्स। कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स लाइक कि आप काम कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज डोंट वांट टू लाइक पुट योर कर्सर ऑन द दिस रेक्टेंगल मेन्यू एंड देन सेलेक्ट द शेप। all you have to do is just put the click on like for rectangle, if you like want to draw a rectangle, press R. Here it is. If you want to draw a circle, press O. Here it is. If you want to draw a line, press L. Here it is. लाइन का भी अगेन एक और शॉर्टकट है। ये लाइन जैसे भी बनी, ये टेढ़ी बन गई। माउस से सीधी लाइन बनाना इज प्रीटी मच डिफिकल्ट। सीधी लाइन कैसे बनती है, उसका शॉर्टकट है होल्ड द शिफ्ट की एंड ड्रॉ अ लाइन। ये देखिए, इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट। तो दीज आर जस्ट शेप्स। उसके बाद आता है ये पेन टूल, पेंसिल टूल। ये इलस्ट्रेशंस या वेक्टर आर्ट्स बनाने के काम आता है। इट्स लाइक इफ यू आई वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस, डन। अब आई वांट टू चेंज इट शेप। ओके, सो ये देखिए, आई कैन चेंज इट्स शेप। ये इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू इलस्ट्रेटर ओनली। ओके, तो ये आपका पेन टूल हो गया। देन दिस इज आवर टेक्स्ट टूल, इसमें जस्ट यू कैन टाइप एनीथिंग। एंड दिस वन, यहाँ पर आपके कंपोनेंट्स, प्लगइन और विजेट्स आते हैं। कंपोनेंट्स हम आगे सी अभी, चलिए कंपोनेंट्स भी आपको अभी बता देते हैं। सो क्या रहता है कि अब जब पूरा यूआई बनाते हैं, यूआई बनाते टाइम देयर इज बेसिक थिंग्स लाइक अप एरो, डाउन एरो, होम बटन, सेटिंग्स बटन, यू कैन सी इन द मेन्यू। अब ये भी अगर आप ही बनाने जाएंगे तो इट विल टेक अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। सो उसकी जगह हम फिग्मा में प्लगइन्स होते हैं जो अपन को ये सारे आइकन्स ऑलरेडी दे देता है। अपन वही आइकन्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो वो सारे ये सब कहलाते हैं कंपोनेंट्स। देन वी हैव प्लगइन्स। प्लगइन्स आर बेसिकली दैट मेक योर लाइफ इजी। आगे जब अपन हैंड्स ऑन अभी स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्लगइन्स और क्या होते हैं। देन वी हैव विजेट्स। इसके बाद ये हैंड टूल होता है। देन दिस कमेंट। ये बेसिकली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको अपना वर्क सुपरवाइज करवाना है, तब ये ज्यादा काम आता है। होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। ओके, लेट्स जंप टू आवर हैंड्स ऑन। हम्म तो ये हमारे यूआई हैं जो आज हम बना रहे होंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड देन दिस मॉकअप। फर्स्ट थिंग, मैं पूरा डिट्टो एग्जैक्ट नहीं बनाऊंगा, वो आप लोगों का काम है। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा या करना कैसे है चीज, या हाउ शुड यू लाइक प्रोसीड, व्हाट आर सम बेसिक मिस्टेक दैट पीपल डू। ये चीज ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके डिजाइन करते टाइम हेल्प कर सकती हैं, एंड अदर स्टफ्स आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं एक लैंडिंग पेज। ओके, सो अगेन वन मोर शॉर्टकट। ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब एक तो और है कि मैं, ओके सो इस फ्रेम में मेरे को जूम करना है। तो वो कैसे होता है, यू होल्ड कंट्रोल एंड देन ड्रैग योर माउस व्हील इन द फ्रंट, इट विल जूम इन टू द फ्रेम। और
अब हर बार भी अपन ये नहीं कर सकते, तो अब मेरे को लेट्स से एग्जैक्टली इसी फ्रेम में जंप करना है। ये पूरे मैकबुक एयर वाला इसी फ्रेम में मेरे को जूम इन करना है। तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड टू, देयर यू गो, एज सिंपल एज इट लुक्स। तो अपन ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, आई सेलेक्ट अ फ्रेम, आई गो फॉर डेस्कटॉप, मैकबुक एयर, हियर आई गो, आई प्रेस शिफ्ट एंड टू, जूम इन, सिंपल। तो आई जूम आउट। अब स्टार्ट कैसे करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद लेवल्स। आपने इसे देखा, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है इसे, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इज समवॉट लाइक डार्क वॉयलेट और समथिंग। फिर हमारे पास आता है ये ग्लू, ये जो एक आपको हल्का सा एंगुलर ग्रेडियंट दिख रहा है, ये देन वी हैव आवर टेक्स्ट, होम बटन, कॉन्टेक्ट अस, देन दिस वेरी दैट दिस अवतार, बटन। सो ये सारी चीजें हैं रहती हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट इन लेवल्स। तो फर्स्ट थिंग, मेरे को मेरे डेस्कटॉप को कलर देना। सो ओके, चल, अच्छा, आप कलर देते टाइम भी आई गिव यू सम शॉर्टकट्स एंड स्टफ। दिस इज अ ड्रॉपर। अब मेरे को एक कलर चाहिए। तो जनरली जब आप प्रोफेशनल लेवल पे डिजाइन करते हो, तो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अपने उसके कलर पैलेट्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पॉटिफाई का यूआई वापस से डिजाइन कर रहा हूँ, तो स्पॉटिफाई मेरे को अपने पूरे यूआई का कलर पैलेट देगा। तो मेरे को कलर एज सच पिकर से उठाने की या यहाँ से उठाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट उस कलर पैलेट से उठाऊंगा। वो कैसे उठाऊंगा, आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉपर एंड सेलेक्ट अ कलर, एस, देयर यू गो, हियर। यहाँ पे आपका कलर सेलेक्ट हो गया। सेम, सेम दिख रहा है। ओके, अब अब है ये ग्लो। ये कैसे बनाते हैं, ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, लुक एट इट। विल सेलेक्ट अ सर्कल, फॉर सर्कल आई प्रेस ओ एंड ओके, ये मैंने बना दिया। अब ग्लो कैसे करना है, तो you see this effect, I'll click on background blur, I click on this icon, I'll make the blur around 200, 200 तक मैं इसको कर दूंगा। I'll fill the color with, I'll select violet and then just light the color. Okay, so it's not background blur, it's layer blur. Here you go, simple. Sorry, I guess color change. Here you go, pretty much looks the same. दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बस। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपकी कन्वीनियंस के लिए, ओके, वन मोर शॉर्टकट। फिग्मा में शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके इट्स लाइक आप ऊपर नीचे करते जाएंगे, इट विल ओनली कॉस्ट यू टाइम। और प्रोफेशनल लेवल पे आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मेरे को पूरी इसको कॉपी करना है, व्हाट विल आई डू, आई जस्ट प्रेस होल्ड की, देन मूव, स्क्रॉल डाउन एंड हियर, ये कॉपी क्रिएट कर दिया। ये देखिए, ये कॉपी क्रिएट कर दिया। अब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली देख सकता हूँ, आई डोंट हैव टू स्क्रॉल अप। ओके, सो प्रीटी मच लुक्स द सेम। अब ये, नाउ आई विल ऐड टेक्स्ट ऑन इट। इसके बाद अपन टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट के लिए ऑब्वियसली आई गो ऑन टेक्स्ट। पहले मैं जो टेक्स्ट है वो मैं लिख लूंगा, सिंपल। ओके, सो वन मोर शॉर्टकट, ऊपर नीचे स्क्रॉल आप अप राइट से कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट लेफ्ट एंड राइट, फॉर लेफ्ट एंड राइट प्रेस शिफ्ट की एंड स्क्रॉल अप एंड डाउन, सिंपल। ओके, नाउ अगेन टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आई सेलेक्ट द टेक्स्ट। पहले मैं पूरा टेक्स्ट लिख लूंगा, आई वोंट गो ऑन साइज कलर्स एंड वो, पहले मैं सिंपल अपना पूरा टेक्स्ट लिखूंगा। सो हियर आई गो, ग्रो,
तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इसका मेरे को फॉन्ट और साइज चेंज करना है, तो वो पूरा यहाँ से आता है। अब मैं थोड़ा इसका भी समझा देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट फिग्मा के पास गूगल फॉन्ट्स पूरे सेव रहते हैं। तो जनरली क्या रहता है कि अगर आप फोटोशॉप यूज करें या इलस्ट्रेटर यूज करें या कोई भी ऐप यूज करें, तो उसमें जो वो फॉन्ट्स लेता है वो आपके कंप्यूटर डिफॉल्ट के फॉन्ट्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सेव रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड फिग्मा के पास सारे गूगल फॉन्ट सेव होते हैं। तो लेट से कोई नया फॉन्ट आता भी है गूगल की तरफ से, तो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप जस्ट फिग्मा को अपने अपडेटेड रखिए। यहां से मैं मेरे सारे फॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एज यू कैन सी फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं। अगेन, ऑन प्रोफेशनल लेवल कंपनी आपको कलर पैलेट्स के साथ उसके फॉन्ट्स भी देगी कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल्स पे काम कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू दैट वरी अबाउट फॉन्ट। बट अगर आपको अपना खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें पूरा रोल आपका ही है, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल अबाउट फॉन्ट्स, कि फॉन्ट्स प्ले अ मेजर रोल। सबसे पहले जो कुछ दिखता है तो फॉन्ट्स दिखते हैं। ओके, सो यहाँ से आप यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, बट आई विल स्टिक ऑन द नॉर्मल फॉन्ट। फ्रॉम हियर आई कैन चेंज द फॉन्ट साइज। It's right now it's 80. So let's make it 100. Here you go. Let's make it 200. Here you go. Let's make it 50. Here you go. 80 looks good. Okay. So if I select this, अब मेरे को दो लाइंस की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए यूज दिस। यू सी, दो लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है। ये ये दो लेटर्स के दिस दिस वन, ये दो लेटर्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ाता है। लुक, एज यू कैन सी, तो ये आपकी लेटर स्पेसिंग में काम करता है। I'll put it to 0 only. ये आते हैं अपने टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसकी अलाइनमेंट क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इफ आई वांट टू मेक इट इन सेंटर हियर? व्हाट इफ आई वांट टू मेक फ्रॉम इट राइट टू लेफ्ट हियर? तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट के काम आते हैं। ये अलाइनमेंट्स के टाइम के टाइम पे काम आते हैं। अभी ऐसा अलाइनमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेट्स से यू हैव अ बंच ऑफ पैराग्राफ, वहां पर आपको अलाइनमेंट्स देखनी है, उस साइड का वहां पे जाके काम आते हैं। दिस ऑटो विड्थ एंड दीज ऑटो विड्थ, ये आपके ऑटो लेआउट्स में काम आते हैं। वो जब अपन ऑटो लेआउट समझेंगे तब हम आपको बताएंगे। ओके, सो आई पुट इट हियर। अब कलर्स की बारी। स्केल यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो आई पुट इट इन ग्रीन। ओके, अगेन, अब जैसे जैसे कलर्स चूज करते रहेंगे वैसे वैसे ये डॉक्यूमेंटेड कलर्स, वो कलर सेव होते रहेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि अगर आप आपको बार बार कलर चूज करने की जरूरत मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पड़ेगी। वरना एच एक्स कोड भी याद रखना चाहिए। जनरली जब कंपनी आपको कलर्स बताती है वो बेसिकली आपको एच कोड ही देती है। कलर पैलेट्स में या तो कलर पैलेट्स होता है, वरना एच कोड होता है। बट एच कोड लिखना लाइक काफी काम, वो मेहनत का काम हो जाता है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट ये ड्रॉप टूल से ही काम चला लेते हैं अपना। लुक्स द सेम। अब नाउ वी विल गो विद द बटन पार्ट। अब बटन कैसे बनाना है? ओके, सो हियर्स दिस इंटरेस्टिंग पार्ट। बटन बनाने के लिए आई कैन यूज द फ्रेम और आई कैन यूज द रेक्टेंगल। दोनों सेम से ही दिख रहे हैं, राइट? बट सेम है नहीं। आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है रेक्टेंगल में। कैसे? लेट्स से रेक्टेंगल में कंस्ट्रेंट्स नहीं होती। व्हाट आई मीन बाय द कंस्ट्रेंट्स? लाइक, लेट मी शो यू। इफ आई ड्रॉ अ nav bar, लेट्स से दिस frame 72 इज अ लैंडिंग पेज और ये nav bar है। अब स्क्रीन छोटी बड़ी हो सकती है, लाइक आई स्क्रीन कैन shrink एंड एक्सपेंड आल्सो। बट देख रहे हैं nav bar पूरा खराब हो जा रहा है जैसे मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ। उसके लिए आई यूज कंस्ट्रेंट। आई वांट कि जब स्क्रीन बड़ी हो
तो ये नैव बार वाला ये जो सेक्शन है, ये लेफ्ट में स्टिक रहे, और ये वाला जो सेक्शन है वो राइट में स्टिक रहे। इसके लिए व्हाट विल आई डू, आई डू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स का ये देखिए ये बॉक्स, तो आई क्लिक ऑन दिस फ्रेम। अब यहाँ ये दो ऑप्शन आते हैं। ये आता है किस तरफ से आप स्ट्रेच कर रहे हैं, मुझसे किस तरफ से आप साइज बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो दिखाता है। दिस शोज राइट, लेफ्ट एंड राइट, दिस शोज टॉप एंड बॉटम। मतलब इसमें आप हाइट चेंज कर रहे हैं, इसमें आप उसकी विड्थ चेंज कर रहे हैं, एज सिंपल एज इट लुक्स। तब आई वांट कि लेफ्ट में ही रहे, तो आई चूज इट टू लेफ्ट। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, लेफ्ट, राइट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, सेंटर एंड स्केल। ये सभी अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड तो ये आई वांट कि दिस टू स्टे इन लेफ्ट ओनली, सो आई क्लिक लेफ्ट। आई वांट दिस टू स्टे इन राइट ओनली, तो आई क्लिक राइट। एंड जब इसकी हाइट चेंज हो, आई वांट दीज बोथ टू स्टे ऑन टॉप ओनली, सो आई चूज टॉप। अब मैं इसकी हाइट फिर से बढ़ाता हूँ। यू सी, यू सी, नेवर अपनी ही जगह स्टिक है। अब बाकी चीजें भी एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से आई हैव दिस वन मोर रेक्टेंगल। ओके, अब जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ये ये ऊपर वाले दोनों फ्रेम्स तो स्टिक है, बट ये चेंज हो जा रहा है, और मुझे चाहिए था कि ये हमेशा सेंटर में रहे। तो हाउ शुड आई डू इट? ऑब्वियसली, यू गेस्ड इट राइट, सेंटर। जब मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ये सेंटर में ही रहे। अब हाइट बढ़ाने से भी चेंज आ सकता है, तो हाइट ओन इन हाइट ऑल्सो आई चूज इट टू सेंटर। अब मैं इस फ्रेम को कैसे ही बढ़ाऊं, ऐसे ही, ऐसे, ये सेंटर में ही रहेगा। इससे क्या होगा कि विंडोज की मॉनिटर की साइज चेंज होने से मेरी जो डेस्कटॉप है उसकी ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट में चेंज नहीं आएगा, तो वो अपना लेआउट मेंटेन रखेगा। अब बचता है लेफ्ट एंड राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस, मेरे पास ये बटन ना होके पूरा एक नैव बार है, पूरा स्ट्रेच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होल। अब मैं इसको पूरा स्ट्रेच कर रहा हूँ, किसी ये लेफ्ट में की तरफ खिंच जा रहा है, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि जैसे जैसे स्क्रीन का स्केल बढ़े, ये भी अपना स्केल बढ़ाए। तो व्हाट विल आई डू, आई चूज स्केल। लुक, अब मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, ये भी अपना स्केल बढ़ा रहा है, बोथ इन लेफ्ट टू राइट। ओके, सो यहाँ पर लेफ्ट स्केल और लेफ्ट टू राइट सेम काम करेगा। लेट मी शो यू हाउ। देखिए, सेम काम कर रहा है, बट कहाँ सेम काम नहीं करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आई चूज इट टू लेफ्ट एंड राइट, चूज दिस एलिमेंट टू लेफ्ट एंड राइट। तो अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, तो इट विल डज द सेम, स्केल पे करने पे भी सेम रहेगा, बट अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो इसकी जो हाइट है वो सेम है। जब मेरे फ्रेम की हाइट चेंज हो रही है तब भी इसकी हाइट सेम है, बट ऑन द अदर एंड, इफ आई क्लिक ऑन स्केल, सॉरी, इफ आई इंक्रीज द फ्रेम हाइट, you'll see स्केल बेसिकली क्या करता है। आपके जब फ्रेम, जो आपके पेरेंट एलिमेंट होते हैं, सो बेसिकली दिस फ्रेम 72 इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, एंड दीज फ्रेम्स आर कॉल्ड चाइल्ड एलिमेंट। तो स्केल क्या करता है, जब आपके पेरेंट एलिमेंट की साइज बढ़ती है, तो स्केल भी आपकी अपने चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड जो एलिमेंट होता है उस पेरेंट एलिमेंट में, उसकी साइज भी बढ़ा देता है। दैट्स व्हाट स्केल डज। सो आई एक्सप्लेन यू स्केल, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट। लेट्स कम बैक टू आवर डिजाइन। वी वर ऑन बटन। सो मैंने आपको फ्रेम बताया, बट ये चीज रेक्टेंगल में नहीं हो सकती। लेट मी टेल यू हाउ। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैंने इसके अंदर एक फ्रेम सेलेक्ट किया। ओके, सिंपल। लेट्स सी, कलर दे देते हैं इसको, क्या करना से कलर दे देते हैं। ठीक है, अब मैं, देखिए, यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट्स का आ नहीं रहा है, तो सिंपल डिफरेंस यही है, फ्रेम सपोर्ट कंस्ट्रेंट बट योर रेक्टेंगल डजंट। तो जब आपकी उसकी साइज चेंज होगी, यू हैव लाइक नो ऑप्शन टू चेंज द फ्रेम।
according to the size of rectangle. So this is the drawback. Okay. So आपको आई गेस यहाँ समझ आ ही गया होगा. We will use frames in this. So let's make button now. I'll select a frame. I'll give it a random size for at that moment. अब I'll adjust my button accordingly. Like, मैं इस पे ऊपर ले जाके चेक करूंगा कि पहले सही दिख तो रहा है क्या. नहीं, बड़ा लग रहा है तो ऑब्वियसली आई श्रिंक. ओके. आप जब ऐसे श्रिंक करते हैं तो देखिए आपकी जो विड्थ और हाइट है वो अनइवनली बढ़ रही है. बट व्हाट इफ आई वांट कि दोनों इवनली कम हो. फॉर दैट आई विल होल्ड शिफ्ट एंड देन श्रिंक. इवनली कम हुई है. दिस विल हेल्प you to maintain that similarity in height and width. I think this will look good. Okay. Ab, how will you give this rounded corners? This rounded corners in this button. How will you give that? For that, select this triangle. You see there? It's called corner radius. I'll give it a value for say let's say 50. Okay, 50. There you go. You got this rounded corners. This button I think looks good. I'll shrink it a bit. Okay, works. There. Now I'll add some text in it. I'll decrease the text font size to 40. Let's make it 25. Yeah, 25. What's our button says get started. Yeah. Hmm. Okay, friends. Now we'll learn about auto layouts. You see, मुझे get started के अलावा कोई और टेक्स्ट भी ऐड करना है. Let's say I want to add are you ready? तो देख रहे हैं आप ये आउट ऑफ फ्रेम हो जा रहा है बार बार. और अगर मैं ये नहीं भी करूं और व्हाट इफ आई इंक्रीज द फ्रेम साइज. ये क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि अपनी जब विंडो की साइज चेंज होगी. लेट्स से अभी मैं डेस्कटॉप का यूआई बना रहा हूँ. जब ये यूआई रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ऑब्वियसली. जब ये कन्वर्ट होगा फोन के यूआई में तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम हाउ? इसका साइज श्रिंक होना पड़ेगा. बट देखिए ये आउट ऑफ ये बाहर जा रहा है. तो दिस इज वेयर ऑटो लेआउट कम्स इनटू पिक्चर. सो व्हाट इज ऑटो लेआउट? एंड पहले तो मैं बताता हूँ कि ऑटो लेआउट बनाते कैसे. यू सेलेक्ट द होल थिंग. Press Ctrl plus G for grouping the select for grouping it. Grouping what? Grouping this frame and text. Then press Shift A. You see something happened. This is called auto layout. These two arrows tells about the direction in which we are in which auto layout supposed to be working. This is the horizontal. This is the vertical. This is the vertical. Oh, don't worry, I will tell you what are these. Horizontal direction. Let's see. I want to increase. Get started. Yeah. Mhm. You see, it's still getting out of frame. So let me decrease the font size. I'll make it 50. Hmm. Now press to copy the element multiple times. The shortcut is Control plus D. It's still getting out of frame. When so, what will I do to avoid this?
I'll choose auto layout in horizontal direction. Then you see over there, it's called sizing, horizontal sizing and vertical sizing. Right now, it's fixed. We'll select the frame. We'll choose auto layout in horizontal direction. Okay, for some reason it's not working. Just make another frame. Add text. Decrease the frame size. Oh, I'll just copy the element one more time. I'll choose auto layout for this frame. Control Shift A. Auto layout in horizontal direction. Want to keep the elements in center. I want to okay. D D D D. You see, as I mean, जैसे जैसे इस पे फॉन्ट्स ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी विड्थ चेंज होती जा रही है. अब एक और दिखाते हैं. Let's say I choose the auto layout in horizontal direction. Look, जैसे जैसे इस पे फॉन्ट्स ऐड होते जा रहे हैं इस दिस टाइम इसकी हाइट चेंज होती जा रही है. जब मैंने ऑटो लेआउट इन वर्टिकल डायरेक्शन चूज किया है, जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चूज करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी विड्थ इंक्रीज करेगा. ये कैसे हो रहा है? यू लुक दीज. तो कुछ ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. हग शोज व्हाट हग मींस इज कि कंटेनर फ्रेम में जितना भी टेक्स्ट है उस सबको इंक्लूड करना है, लाइक सबको. बट अगर मैं इसकी विड्थ फिक्स कर दूं, विड्थ फिक्स लाइक आप बहुत ऑब्वियसली नेम से समझ पा रहे हैं कि इसकी विड्थ फिक्स रहेगी चाहे मैं उस पर कितना ही टेक्स्ट और ऐड होता रहे. तो अब अगर मैं फिर से ऐड करने लगूं तो वो बाहर जाते जा रहा है, बट फ्रेम की वो सेम है. अगेन इसको हॉरिजॉन्टल में भी ट्राई करके देखते हैं. थोड़े से जेड डी बहुत ज्यादा हो गया है. मेरे को मल्टीपल अगर ये सब सेलेक्ट करने हैं तो आई विल प्रेस शिफ्ट एंड देन सेलेक्ट इट. यू सी, दिस इज अगेन अ शॉर्टकट. मेक श्योर टू राइट ऑल दी शॉर्टकट्स. ओके. अब ऑटो लेआउट की, अच्छा यहाँ पर अभी आपने एक और चीज देखी. जैसे जैसे मैंने ये डिलीट की है ऑटो लेआउट ने अपने आप इसकी विड्थ कम करता गया, कम करता गया. क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइट थी वो हग हग कंटेंट्स थी. अगेन अगर मैं इसकी हाइट फिक्स कर दूं और फिर मैं और ऐड करने लगूं तो देखिए हाइट चेंज नहीं हो रही. ये काम होता है ऑटो लेआउट का. सो ऑटो लेआउट बेसिकली करता क्या है? आपका पेरेंट एलिमेंट है फ्रेम 72 एंड जेड डी आर योर चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रंस के अलाइनमेंट की चेंज होने से पेरेंट एलिमेंट कैसे चेंज होता है ये ऑटो लेआउट बताता है. बट कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या बताते हैं कि पेरेंट एलिमेंट के चेंज होने से चाइल्ड कैसे चेंज होगा. साउंड्स कंफ्यूजिंग. वापस से रिपीट करता हूँ. ऑटो लेआउट में चिल्ड्रन एलिमेंट चेंज होता है. चिल्ड्रन एलिमेंट में जब आप वेरिएशन करते हैं तो पेरेंट एलिमेंट कैसे चेंज होता है. कंस्ट्रेंट्स में आप पेरेंट एलिमेंट में चेंज करते हैं तो चिल्ड्रन एलिमेंट कैसे चेंज होगा. कंस्ट्रेंट्स में अपन ने क्या किया था? अपन ने एक फ्रेम लिया था, फ्रेम की अपन ने साइज आगे पीछे की थी. तो अंदर के जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स थे, जो दो फ्रेम्स थे, वो कैसे चेंज हुए थे. इसमें अपन चिल्ड्रन एलिमेंट्स को चेंज कर रहे हैं. तो अपन देख रहे हैं फ्रेम्स कैसे चेंज हो रहा है. वो अपनी हाइट बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा, कम कर रहा है, नहीं कर रहा. क्विकली मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये इन दोनों के गैप्स के बीच में बताता है. गैप्स इसमें ये देखिए, यू कैन टूक इट टू नेगेटिव वैल्यू.
keep going as long as you want. अब ये कहाँ काम आता है? लेट मी शो यू। तो लेट्स से इंस्टा पे स्टोरीज का स्टेटस रहता है पूरा। तो ये पूरा डिलीट करते हैं तो पहले ये सारे सब मैं एक साथ कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ? अगेन रिपीटिंग, शिफ्ट प्लस क्लिक, और आई चूज सर्कल हियर, I'll duplicate these. Okay, so auto layout in horizontal direction. Okay, I'll select a new frame. Circle, circle, one, duplicate, duplicate, duplicate. Okay, again, auto layout. Shortcut is Shift A. Auto layout started working. देखिए, लेट्स से ये सारी सर्कल्स डीपीज है। आई वांट कि ये डीपी एक के ऊपर एक स्टैक करे, तो वो मैं ऑटो लेआउट से ऐसे कर सकता हूँ। ओके, मैं इसका पहले कलर चेंज करके दिखाता हूँ, तब आपको शायद ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिखेगा। आई चूज इट टू रेड, choose this one to yellow, choose this one green. Works. Up, look, these are stacking on top of another. Okay, so these basically add paddings. Paddings और margins क्या होती है, ये अगेन एक खुद में एक टॉपिक है। बहुत शॉर्ट में बताओ तो पैडिंग्स होते हैं इनके आसपास के गैप। यू सी, लुक, यू सी दिस शेडेड एरिया ओवर हियर, दीज आर कॉल्ड पैडिंग्स। ये सर्कल बाउंड्री से कितना दूर रहना चाहिए, तो ये भी आप ऑटो लेआउट से चेंज कर सकते हैं। बिलीव मी, ऑटो लेआउट इज वेरी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू स्टार्टेड डिजाइनिंग। लुक, तो ये ऑटो लेआउट ही बेसिकली ऑटो लेआउट्स और कंस्ट्रेंट्स ही होते हैं जो अपन इस बटन को बनाने में यूज कर रहे होंगे। तो लेट्स मेक बटन, मेरा लगता है वो वाला डिलीट हो चुका है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। I'll select a frame. Mm, okay, it's not what. It's, this is my frame. Looks good. Give it a border radius 60. Now I'll add some text. Mm, Get started. Decrease the font size to 20. Yeah, okay. So now you see here. Okay, so let's see मेरे को इसमें कोई एरो बटन ऐड करना होता, तो वो मैं कैसे करता? आई चूज माई एसेट्स। एसेट्स बेसिकली अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स बताए थे, वही कम। ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इट्स लाइक कि यहाँ पे फिग्मा कम्युनिटी पे पूरी इलस्ट्रेशंस होते हैं। लाइक ये इलस्ट्रेशन अगेन मैंने फिग्मा से उठाया, ये इलस्ट्रेशन मैंने यूज किया है इधर, यू सी हियर। ये जो भी मैंने इलस्ट्रेशन यूज किया है फिग्मा कम्युनिटी से ही उठाया हुआ है। आगे ये सारे, ये बेसिकली ये सारे इलस्ट्रेशंस मैंने फिग्मा कम्युनिटी से हटाए। सेम मैंने जो एरोज है, ये भी फिग्मा कम्युनिटी से ही उठाया। इसको आप एसेट्स में अपने एसेट्स और लाइब्रेरीज में डाल सकते हैं। वो थोड़ा वो अपन बाद में सीखेंगे, इट्स लाइक काफी डिटेल में हो जाएगा फिर वो। वी नीड टू कंप्लीट इट। ओके, सो आई एम काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट हरी इट अप। आई चूज दिस एरो। ओके, सो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इट सेज इंसर्ट इंस्टेंस, so this is an instant. So basically we have two things, components and instance. वो क्या होता है? Let's say मैंने इसको पूरे को, ओके, सो
I'll choose a frame, give it some color, and add a circle on it. Yeah, a circle on it. I'll select this hole. No, not the hole, but yeah, the frame and this circle. Here, this is how you create component. Case for some reason, इसमें multiple frames ऐड कर लेता हूँ. This will work. इसको मैं कलर देता हूँ रेड. This is how create a this is how you create a component. अब you cannot directly change into components. कैसे sort of change like कुछ small stuff like आप color change कर सकते हैं, font change कर सकते हैं, but let's say when you want to add some auto layout, some constraints that you cannot add on components. और दूसरा components आपके रिस्पॉन्सिवनेस में भी काफी वो करते हैं, मतलब लाइक काफी दे आर नॉट वो अपनी साइज, मतलब वो उतने अलाइनमेंट वो आसानी से चेंज नहीं कर लेते वो. अब इसमें ऐसा ऑटो लेआउट भी ऐड नहीं कर सकते, तो इट्स एडवाइजेबल नॉट टू यूज कंपोनेंट्स डायरेक्टली. सो अब कंपो इंस्टेंस और कंपोनेंट क्या होता है, जब मैं इंस्टेंसेस को कॉपी करता हूँ तो वो एक, जब मेरा कंपोनेंट कॉपी होता है, कॉपी लाइक ऑल्ट, यू नो, लुक दिस, I, I'm copy this frame using the shortcut Alt. This is an instant. No, not exactly. अगर मैं इसका कंपोनेंट क्रिएट करता और फिर मैं इसे कॉपी करता तो ये एक इंस्टेंस बनता. अब इंस्टेंस को मेरे को वापस बैक टू लाइक नॉर्मल क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? अगेन इसका शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. प्रेस कंट्रोल ऑल्ट एंड बी, यू नो, लुक्स. इसे देख लीजिए, ब्लू बॉर्डर आ रही है, ब्लू बॉर्डर आ रही है. पहले इसमें वॉलेट बॉर्डर आ रही थी, मतलब ये इंस्टेंस था. इंस्टेंस मतलब कंपोनेंट का पार्ट. तो जब भी आप इंस्टेंस ऐड करें, ये एसेट्स में आप जब कुछ भी उठाएंगे तो इंस्टेंस में ऐड होगा, बट डोंट डायरेक्टली वर्क ऑन इंस्टेंस, कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल. ओके, डिटैच इंस्टेंस. शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल ऑल्ट पी, सिंपल. अब आई ऐड, उससे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं. कलर, या here you go. Here, looks decent. अब इसका मैं कलर चेंज करता हूँ अपने बटन का. I'll choose it to green. Okay, I'll group this whole selection, control G. Let's create a component of this button. You see, ये कंपोनेंट है. अब मैं ऑल्ट करके इसको सेलेक्ट कर, तो क्या होगा? ये मेरा इंस्टेंस होगा. कैसे? मैं आपको बताऊं, देखिए. यू सी, यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ स्क्वायर है, बट यहाँ ग्रुप 26 इज अ हॉलो स्क्वायर, बट ग्रुप 25 इज अ सॉलिड स्क्वायर. तो ग्रुप 25 रिप्रेजेंट्स अ कंपोनेंट, बट ग्रुप 26 रिप्रेजेंट्स अ इंस्टेंस. तो ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ. वो इंस्टेंस को मुझे डी, अगर डिटैच करना है तो मैं करूंगा ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट बी. अगेन मैं आपको 3 बार रिवाइज करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. तो दिस इज हाउ आई क्रिएट अ बटन. ओके, सो आई एम काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम. अब मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ. ये टोटल ये कैसे बना. सो आई सेलेक्ट अ फ्रेम, आई गिव सम कलर. ओके, अब मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ ग्रेडियंट ऐड करना. अब तक अपन सिर्फ इसमें कलर्स ऐड कर रहे थे, लाइक ग्रीन, व्हाइट, ग्रेइश, येलो, ब्लू. बट
अब अपन यहाँ ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट कहाँ से ऐड होता है? यू सी टॉप राइट, दिस इज फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के जैसे आप इसमें इमेजेस और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, बट एज सच इमेज और अभी वीडियो ऐड करने की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अपन वो भी नहीं करेंगे। बाकी यू कैन ट्राई, आप खुद भी कर सकते हैं। आप इधर देखिए, मेरे पास एक लाइन आ गई पूरी, दिस शोज मेरा ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट कैसे? I click on this, I'll choose my color. No, I click on this, I'll choose my color. Here. But अब इसके जैसा बनाना तो I'll pick my dropper, select it. I'll again to take my dropper, select this color, purple. Then अब मेरे को अब देखिए नीचे जाके थोड़ा सा ब्लेंड सा हो रहा है, उसके लिए what I'll do, मैं डेस्कटॉप वाला ही कलर ऐड कर लूंगा, बट here you can see ये थोड़ा सा विजिबल है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग दिस, यू नो, ऑल्ट करके आप इसे आगे ड्रैग कर लीजिएगा। अब इसका कलर अपन हल्का सा लाइटिश कर लेंगे, या बेटर ड्रॉपर लें। ब्लेंड होता हुआ दिख रहा है, पहले के लास्ट उसके कंपैरिजन में काफी बेटर है। अब ये अवतार ऐड करना है। अच्छा, अवतार कहाँ से मिलेगा? फिग्मा कम्युनिटी, यू गो देयर, आप यहाँ पर अवतार टाइप करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये आ गए 150 प्लस प्रो अवतार पैक। तो मेरे पास ऑलरेडी सेव था। अब इसमें से आप कोई भी एक अवतार उठा लेंगे। मैंने मेरी फाइल के लिए ये उठाया था, तो स्टिल मैं वापस से यही उठा रहा हूँ। आई पेस्ट इट हियर। ओके, अब अगेन यू नो फिग्मा प्लगइन्स मेक योर वर्क सो हैंडी। आई शो यू हाउ। मेरे को इस इमेज को ऐसे कन्वर्ट करना है, वो मैं कैसे करूंगा? आई जस्ट राइट क्लिक, गो ऑन प्लगइन्स। यहाँ पर आपके सारे प्लगइन आ जाते हैं, सारे नहीं आते, जो रिसेंटली यूज होते हैं वो आते हैं। अगर आपको आपके सारे प्लगइन चाहिए तो यू कैन गो हियर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताता ही, यहाँ पर आपके सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। अब एक प्लगइन होता है, where it go, icon set background remover. I click on it. What it will do nothing, जो इस अवतार के पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा हटा दे। You'll see. Wait for some minute. There, here you go. Okay. Look same. इस पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ी, रेक्टेंगल पे, you'd like some 60. Yeah, here you go. Again, group this selection, Control G, create component, component. Simple. अपन ने बटन बना लिया। ओके, आपको पेन टूल का यूज सिखाना था, वो मैं आपको ये बना के सिखाता हूँ। लाइक ये आप कैसे बना सकते हैं? अगेन यू कैन फिग्मा कम्युनिटी से आप जाके इलस्ट्रेशन उठा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन वैसा मिल जाए। उसके लिए कई बार आपको खुद भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो ये अपन खुद ड्रॉ करेंगे कैसे? आई चूज दिस पेन, आई ड्रॉ अ लाइन। मैं ऐसे 3 डॉट ड्रॉ किया है, जस्ट लुक एट इट, 1, 2 एंड 3, एंड आई प्रेस डन। उसके बाद आई डबल क्लिक ऑन इट, आई चूज दिस ऑप्शन। अब ये इस पूरी लाइन में कर्वीनेस लाता है, यू सी। Okay, here you go. This curviness is what I'm talking about. Yep, I'll increase the stroke size. You okay? Looks good. Oh no. Yep, I press done. Increase the stroke size to 7 and give some color like a little grayish. Yeah. Works. Decrease the size. Okay, I decrease this by pressing shift so that मेरे height और width दोनों सेम उस पे लेवल पे डिक्रीज हो। ओके, अब इसके जो एजेस हैं काफी लाइक सटल से दिख रहे हैं, लाइक यू कैन सी द एंड एंड स्टार्ट पार्ट। उसके उसके लिए मैं ये पूरा ही आपको जो वेक्टर है ये पूरा ही बहुत सटल दिख रहा है उसमें, बट इसमें आप देख रहे हैं इसकी ओपेसिटी कम है। तो अगेन आई विल डिक्रीज इट्स ओपेसिटी टू लाइक 60। यप, वर्क्स।
अब अगेन इसके एजेस काफी दिख रहे हैं, आई वांट कि ब्लेंड हो जाए। उसके लिए व्हाट विल आई डू, दिस इज अ लाइक गुड थिंग टू लर्न। चूज दिस सर्कल, is the same how I draw this glow up effect in it. I choose this circle, go on effects, click layer blur, uh, choose the color from dropper to my background color only, and then increase the layer blur size like 100. Okay, I will increase, no, 80 bucks, 50. Yep, sort of. I duplicate this selection. Uh, you can see pretty much looks the same. बाकी इसके ये जो प्रॉपर इसकी कर्वीनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हैं। अगेन अब ये होम बटन इज ऑल्सो, होम बटन भी सेम है, इट्स लाइक क्रिएटिंग दिस बटन मल्टीपल टाइम्स। तो मैं आपको प्रॉपर पूरा एज सच टेक्स्ट के साथ नहीं करके दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू, बिकॉज मैं इसी पे आगे कॉपी कर करके दिखा देता हूँ। अगेन ओके, दिस इज माई होम बटन, बट काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आई सेलेक्ट दिस होल सिलेक्शन, कंट्रोल जी टू ग्रुप इट, एंड I'll do auto layout. Shift A. Auto layout what? मैं हर उस पे भी ऑटो लेआउट ऐड करना चाहता हूँ, ये हर इस फ्रेम पे भी। शिफ्ट ए, कॉज क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं, यू कैन सी इट हेयर कि हो का जो टेक्स्ट है वो कम है एज कंपेयर टू कॉन्टेक्ट अस, साइन और कोर्सेज से। अब या तो मैं एक एक को सेलेक्ट करूं, एक एक को सेलेक्ट करूं, वापस पूरा पूरा बटन क्रिएट करूं, वो काफी टाइम कंज्यूम होगा। इससे बेटर मैं एक फ्रेम लूंगा, लेट्स से मैंने ये ही ले लिया, I'll change the text and who. Okay, sorry. No, delete this. I copy this button. We'll zoom in, zoom, delete this arrow, alter the text. Who. Now I'll add some auto layout in it, which is already added. मेरे को ऑटो लेआउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हाइट चेंज नहीं होगी, मेरी विड्थ चेंज होगी। जैसे जैसे टेक्स्ट की लेंथ बढ़ेगी मेरी विड्थ चेंज होगी, तो मैं विड्थ में ऑटो लेआउट ऐड करूंगा और आई विल पुट इट इन सेंटर। ओके, इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि बटन थोड़ा बटन जैसा लगे। ओके, लुक गुड, फाइन। ओके, अब आई विल डुप्लीकेट दिस सिलेक्शन। अब CON, यू सी, जैसे मेरे टेक्स्ट का लेंथ बढ़ा है इसने अपने आप अपनी विड्थ इंक्रीज कर ली काफी। मेरे को सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना पड़ रहा है अब यहाँ, मेरे को मेरे फ्रेम, मेरे बटन की हाइट विड्थ के साथ डील करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो लेआउट। दैट्स हाउ इट मेक थिंग दैट इट सिंपल। ऐसे ही आप बाकी बटन भी ऐड कर सकते हैं, सेम ये भी आप अगेन आप ऐड कर सकते हैं नॉर्मल फॉन्ट्स इन सब से। अगेन ये मैंने कहाँ से ऐड करा, दिस इज अ कम्युनिटी कॉल्ड फ्री इलस्ट्रेशन, so it's a basically notions community, here free illustrations, I think ये मैंने शायद स्पाइरल इलस्ट्रेशन से ऐड किया है। यहाँ से आप कोई भी इलस्ट्रेशन लेके आप यू कैन इजीली ऐड इट। ओके, सो दी इस इलस्ट्रेशन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो मैंने करके आपको अभी दिखाया था, वैसे तो स्टिल दिखा देते हैं, चेंज इट्स कलर। तो जनरली आपको ब्लैक या व्हाइट में ही मिलता है, बट अगेन आपको अपने डिजाइन के हिसाब से देखना पड़ता है, तो वो आप अपना चेंज कर पाएंगे। अगेन ओके, सो मैं इसको पूरे को ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी। यू कैन चेंज द टेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स, ये बड़ा है।
Control G, select, drag it up here. Okay, works fine, I guess. ये लोगो ये लोगो भी आप इसी से ही बन जाएगा. जस्ट सिंपली टेक अ रेक्टेंगल. यहाँ पर स्ट्रोक्स का काम आएगा. स्ट्रोक्स की आप इसमें से लेंथ बढ़ा देंगे. जो इसमें जो कलर है वो आप नल कर देंगे. यहाँ फिर अपन इसमें बॉर्डर रेडियस लाइक 60 करके इसमें 60. लेट्स मेक इट 100. ओके, रेडियस चेंज करके स्ट्रोक्स का जो कलर है वो ग्रीन कर देंगे. सिंपल. आगे फिर इसके अपन आगे आगे टेक्स्ट ऐड कर देंगे. टेक्स्ट है dev.t dev town dot. I'll increase the font size to, let's say, 100. Mm, yep. Yeah, so this whole designing experience is giving us a gist of UX as well, like designing buttons, what all they do. With change, I'll change my def color to green. Oh, no. Okay, so let's make it 25. Color change. Sort of looks similar, but again, काफी वो है, but right now I'm running out of time, so just hurrying it up. इसको ग्रुप कर दें कंट्रोल जी करके. मेक इट शॉर्ट. ओके, इसमें आगे फॉन्ट भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली. वो आप Yeah, आगे कर लेंगे. that we तो can मैंने do, that we can या manage. so I'll just wind it up quickly. मैंने आपको लाइक मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता दी है. I'll explain you what component is, auto layout, constraints, auto layout से constraints में क्या डिफरेंस है, क्या यूज आते हैं. I'll show you how to use Yeah, pencil tool. मोटी completely. मोटी चीजें मैंने आपको कर ली है. अगेन आपका होमवर्क. ओके, सो दिस लास्ट थिंग आई गेस ये मैं बता देता हूँ. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इट विल बी गुड इफ. मेरे को इसको प्रेजेंट करना है ऐसे. इसके लिए मेरे पास एक प्लगइन है. आई जस्ट शो यू द प्लगइन. इट्स कॉल्ड क्ले मॉकअप 3D. और भी काफी प्लगइन्स है, तो जो जिससे आप सूटेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं. तो इसमें आई सेलेक्ट माय मैकबुक प्रो. फ्रंट, चेंज इट्स कलर टू 000 ब्लैक. ओके, सेव इमेज. हियर, Yeah, so we दिस can इज see हाउ यू हमारा क्रिएट जो अ मॉकअप. what we are building and it comes to reality as well, how it will look in the mock-up. So ओके, I would सो like to दिस इज mention अबाउट इट. ProtoPie here. प्रोटोपाई हेयर. सो फिग्मा के प्लगइन्स तो है ही हैं, लेकिन एक प्रोटोपाई एक्सटर्नल प्लगइन है दैट आल्सो यू कैन यूज. इट वर्क्स ऑन विंडोज एंड iOS OS मैक OS. ओके, सो आई थिंक मैंने आपको ये बना बता दिया है. बाकी जो इसमें चीजें यूज होने वाली है, जो मेन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है. सो नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू डिजाइन दिस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. अगेन बिलीव इट सिंपल. यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग वाले बटन में आप पे कंस्ट्रेंट्स वाले क्यूरी वो पॉइंट काम आएगा, और यहाँ पे ऑटो लेआउट वाला. ये आपका होमवर्क है, आपको खुद डिजाइन करना है. आई गेस आपका एक बट ग्रुप बन रखा है ऑलरेडी व्हाट्सएप. but with a twist, यस. like you can choose two themes out of two themes. One is retro tech and one is future tech. If you wish to ये incorporate any texts from retro and you any text from futuristic, or you can stay relevant to this theme as well जो अभी यहाँ पे लगा हुआ है. Just variate it according to you and the best entry may wins a goodie. ओके, सो आई गेस इनको एक और चीज बतानी थी. वो भी जल्दी से बता के खत्म करते हैं. तो ओके, सो
यू नो अपन कभी कभी अपने पोर्टफोलियो के लिए या अपने रेज्यूमे के लिए यूआई बनाते हैं, तो अपन को डिजाइन आइडियाज चाहिए होते हैं। पहले क्या होता था, जब एआई नहीं था तो यू हैव टू राइट एक ब्लैंक कैनवास से स्टार्ट करना पड़ता था। बट अभी एआई की वजह से आपको ब्लैंक कैनवास से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एआई विल डू आई गेस 40% ऑफ योर जॉब, बट बिलीव मी 60% आपको ही करनी पड़ेगी। तो वो रहा, दिस इज कॉल्ड लेक्सिक दिस दिस एआई इज कॉल्ड लेक्सिका डॉट एआई। एक मिड जर्नी करके भी एक एआई था डिस्कॉर्ड पे, बट वो पेड हो गया है, वरना दैट वाज द बेस्ट एआई। So now, in replace of that Midjourney, you can use this Lexica or Leonardo.ai to get that idea of how will you design it. Yeah, exactly. And So again, yeah, Himangi is asking whether futuristic is cyberpunk type. Yes, completely. Cyberpunk is what we meant when we said futuristic tech. Retro tech, futuristic tech, or what we have showed, what Devansh has just showed you from section 1 and section 2. The pop okay, I theme, guess. basically, those Hmm. colors. So I guess theme change करना शायद थोड़ा भी इनिशियल स्टेज में मुश्किल हो जाएगा। Let's just do one thing. Section 1, आप रेट्रो थीम या व्हाट यू कॉल दैट फ्यूचरिस्टिक और साइबरपंक उस थीम में बनाओ। सेक्शन 2, यू ड्रॉ इट एज इट इज, यू डिजाइन इट एज इट इज। और आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप उनमें फिग्मा लिंक शेयर करना, अपने नाम, रोल नंबर, ब्रांच और ईयर के साथ सब Yeah, वो। we will contact you after, and we will drop the information ki last date of submission kab hai. And of course, there is something really exciting forward your way. इनको बता देते हैं कि क्या वेट क्या कर रहे हैं इनका, लाइक थोड़ी मोटिवेशन तो चाहिए ना करने के लिए, छुट्टी में है, घर पे है। Okay, so we won't gatekeep this. You will get a T-shirt basically as a goodie. You will get a t-shirt, or you'll get a chance to get a lateral entry in Hackmall. Hackmall, we have a GDS event in February. So the best design will get a chance to win a hoodie or a directly lateral entry in Hackmall. Again, I think Arush, we should end it. I guess we are Yeah, so keep working, guys. Keep working and on your retro theme or whatever you want to build. It's entirely up to you. And we are looking forward to see your entries. okay, guys. Oh, so again, myself Devansh, chemical second year. Hi, once again, hi, it's Arushi signing off. ICE second year. We'll see you sometime soon. Thank Okay, you guys for joining in. have a good evening. Bye bye. Good night.